Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Domestic stocks fall more than 0.5%. Sensex closes below 57,300 level. Nifty settles below 17,050 points. Rupee weakens 4 paise against the US dollar. And Brent crude price hover around $93 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में गिरावट, प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक घाटे के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 57,300 के स्तर से नीचे फिसला। निफ्टी 17,050 से कम होकर हुआ बंद। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया हुआ 4 पैसे कमजोर और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल के आसपास पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज कुल मिलाकर गिरावट देखने को मिली और प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स तथा निफ्टी 0.5% से अधिक नीचे आकर बंद हुए। सेंसेक्स 57,300 के नीचे फिसल गया, जबकि निफ्टी 17,050 के स्तर से नीचे आकर बंद हुआ। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 391 अंक यानी 0.68% कम होकर 57,236 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 109 अंक यानी 0.64% टूटकर 17,014 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार की ओर चलें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.73% घाटे में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.45% की कमी आई। The Sensex and the Nifty today declined more than 0.5%. Both indices fell amid negative cues from global share markets. The Sensex closed below 57,300 level, while the Nifty settled below 17,050 points. The Sensex declined 391 points or 0.68% to finish at 57,236. The Nifty also plunged 109 points or 0.64% to end at 17,014. In the broader market at the BSE, the mid-cap index declined 0.73% and the small-cap index ended 0.45% down. In the Sensex pack, 8 companies posted gains while 22 logged losses. HCL gained 3.2% and Sun Pharma climbed 1.4%. Reliance surged 0.4% and Dr. Reddy's added 0.2%. On the other hand, Wipro lost the most as it tumbled 7%, followed by SBI, which plunged 2.4%. Larsen & Toubro declined 1.9% and ICICI Bank fell 0.2%. In sectoral indices at BSE, 2 sectors logged gains while 18 logged losses. Healthcare sector gained 0.2%, metal index added 0.1%. On the other side, services sector lost 1.4%. Capital goods and Bankex, both indices declined 1.2% each. Financial services plunged 1.1%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,293 companies gained while 2,137 fell. Shares of 132 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 4 पैसा कमजोर हुआ, 82 रुपए 35 पैसे पर बंद हुआ।
उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 0.26% घटकर 113.03 पर चल रहा था। Infosys today announced its earnings for the second quarter of the current fiscal, reporting an 11% jump helped by strong demand for its digital services. Consolidated net profit of the company rose to 6,021 crore rupees in the quarter ended on 30th of September from 5,421 crore rupees in the year-ago period. India's second top IT company, Infosys, has also announced share buyback worth 9,300 crore rupees along with an interim dividend of 16 rupees and 50 paise per share. Infosys shares today closed about 0.7% lower ahead of its Q2 announcement. हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं etmarkets.com के रिसर्च हेड राजीव नागपाल। राजीव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। A warm welcome, Rajiv. थैंक्स, धन्यवाद। सबसे पहले तो हम बाजार में आज की गतिविधि पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। कुल मिलाकर नरमी का माहौल रहा और बाजार गिरावट के साथ बंद हुए, क्या प्रमुख कारण लग रहे हैं आपको? देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में एक अनसर्टेनिटी है जो यूएस फेड की स्टेटमेंट्स की वजह से, जो बीच बीच में आती रहती हैं, उसकी वजह से है। बट अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखेंगे आपको शायद मंदी लग सकती है, बट अब रिलेटिव बेस पे कंपेयर करेंगे तो इंडियन मार्केट आर स्टिल बेटर ऑफ देन मेनी अदर्स। मार्केट ब्रेथ कंपेयर करेंगे तो वॉट जो पहले होती थी जुलाई में, आप कहें जून से पहले, मतलब पहले 6 महीने में, जो साल के जो पहले 6 महीने थे उसमें थे, वो बेटर है। सो ऑन एट इंडेक्स लेवल आपको करेक्शन दिख रही है, बट आई थिंक एट अ ब्रॉडर लेवल थिंग्स आर फार बेटर। बट ये थोड़े दिन और चल सकती है बिकॉज अभी वही इन्फ्लेशन और के अभी इन्फ्लेशन और लगता है कि थोड़ी स्टिकी ज्यादा है यूएस में। सो इंटरेस्ट रेट वहां पे इतनी जल्दी नहीं घटेंगे। अगर वहां नहीं होगा तो सेंट्रल बैंक अक्रॉस द वर्ल्ड विल नॉट बी गेटिंग इनटू अ मोड ऑफ ईजिंग मनी। सो गिवन ऑल दिस, I think for some more time, we can say that market will remain in a volatile mode and will, जिस दिन बाजार के बाहर के घटेंगे तो हम भी घटेंगे। और दूसरा जो आने वाले दिनों में मार्केट को कंट्रोल करेगा वो है अर्निंग सीजन। थिंग्स अभी उम्मीद है जो बाकी अभी तक रिजल्ट आए वो एक्सपेक्टेशन के बहुत ज्यादा दूर नहीं गए हैं, पर आए कुछ लार्ज आईटी कंपनीज के, जैसे भी आपने इन्फोसिस की बात करी, तो जो रियल रिजल्ट इकोनॉमी कि जो बाकी सेक्टर है, चाहे वो बैंकिंग है चाहे इंडस्ट्रियल, उनके जो आने वो देखना थोड़ा रहेगा। उस पर डिपेंड करता है कि कैसे वो रहेंगे। तो वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है आने वाले दिनों में। Okay, Rajiv, we talked about Fed and everyone knows about it. In fact, they have raised rates from 0% to about 3.25%. And even India has done that. We have raised our rates twice already. So my question to you is, isn't the market already factoring that in? Why is this coming as a surprise, and every time we talk about a hike and the markets react? No, the fact is that, of course, you were partly right when you said that this news is very well known. The question is, when there is a limit to it, in the sense that the earlier expectation was that it probably by middle of calendar year 23, this thing would reach its peak, and what US Fed had indicated that by middle of F23 or max towards the later part of 23, things will settle down. Now, what they are indicating now that things might go even into calendar year 24. Now, interest rates are one of the most sensitive thing. I mean, the stock price is the most sensitive to the interest rate because the cost of capital for the business is going to increase. If the cost of the capital of the business is going to increase, then the earnings are going to get hit. The movement of capital from one country to another gets impacted massively by the currency move. Interest rate in USI, the money all across the world. See, the riskier assets become less attractive because the premium which you are getting by having a riskier asset is not that attractive as compared to what you are getting out of, let's say buying a US bond. If you are
this thing is taken, inflation is taken care by there, and then it does not. So while it is very well known, any statement which reaffirms the fear of the market that things, a tight policy might continue for a longer period of time than expected. See, let's just go back around a couple of months back. Earlier, Fed was saying it is because of the supply chain disruption that things are, inflation is moving up and things should settle down. Now, they were caught on a wrong foot. Now, they are trying to make the amends for taking a slow decision as far as the inflation is concerned, underestimating the problem which inflation is going to create. So the fear is that, is Fed right now, or Fed might again 6 months down the line say, no, we were sorry, we were wrong again on inflation. I think another 1 year we might continue with the tightening. And US Fed, understand, is the mother central bank of the world. So what it does, whether it's Indian RBI or Bank of China or XYZ, these other central banks have to respond to it because they can't afford to have a flight of their capital because everything is going to go towards the mother market. So while you're right, this is a normal thing, market anticipate, market discount, but sometimes and most of the time markets fail to actually discount what the central bank mind is because while they speak very less, but when they speak, they can create major issues, which probably they did yesterday also. राजीव जी, आपने 2-3 बातें जो कही उसमें हम भारतीय बाजार पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। आपने कहा कि भारतीय बाजार दुनिया के कई देशों के तुलना में, कई बाजारों के तुलना में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तो हम जो भारतीय बाजारों की वह शक्ति है उसके बारे में समझना चाहेंगे कि कौन सी वो शक्तियां हैं जो बाजार को मजबूती दे रही हैं और वास्तविक मजबूती दे रही हैं, ये एक सवाल। और दूसरा सवाल, जो इन्फोसिस का रिजल्ट आया है वह क्या संकेत दे रहा है? आपने कहा कि एक्सपेक्टेड लाइन पे चल रही हैं, तो वह जो अनुमानित लाइन है वह क्या है और उसमें इन्फोसिस का परिणाम क्या दर्शा रहा, जो कह लें कि वैश्विक परिस्थितियां हैं उनके मद्देनजर? Add to what Manoj has asked you, I'm adding one more point to that despite... I'll have to start writing it then, the question. No, it is related because this has not brought any cheer to the market, The sentiments continue to be negative, that's all. So sorry Manoj जी, आपको अपना पहला प्रश्न दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। मैं लास्ट राजेश का क्वेश्चन पहले ले लेता हूँ। हाँ जी। राजेश, as far as the market bringing cheers to the fact is concerned, let's look at Infosys. Today, in last 2 years, one sector which really had tailwinds from the COVID was IT. The average valuation, which let's say if whether it was Infosys or any large company was getting X, in last 1.5 years, that valuation became 2x. Now, all the expectations of good performance which is coming now is built into the prices. So, when the results are announced, we don't know, because, buyback and all, so how the stock is going to react tomorrow. Most likely, given the way other companies have reacted, I think it's going to stay in a range-bound mode. Nothing is going to happen. And the bigger thing is that Infosys used to be a bellwether for IT sector, but not for the rest of the market. So it will not bring cheer. And today, again, realize, today is a Thursday. We speak mostly on Thursdays. So the fact is, most of the time I have to tell everyone that it's a derivative expiry, which is a volatility, a day which is supposed to be volatile. And if there is no major positive cue from the global market or Dow Jones futures coming up, the probability that people are going to be reluctant to carry on the weekly expiry positions, rollovers and all, we tend to be more closing on the downward side. So there's a mix of lot of things which happens on Thursday. So it's not purely fundamental. And every time the market is not working on the fundamentals, it's largely because of demand supply and the fact that, at this point of time, I'm just keeping my fingers crossed. I hope there is no major redemption. So this brings me to the point कि why we are outperforming. मनोज ने पूछा था। मनोज जी, देखिए हमारे यहाँ जो सेलिंग थी ना, पहले के 6 महीने देखेंगे तो FIs की इतनी बड़ी सेलिंग हुई थी। हर रोज अगर आप देखते तो 2-2.5 हजार करोड़, $500 billion की सेलिंग आती थी। बहुत पैसा, वो ये मानिए कि जो आपने रुपये में वीकनेस अब देखी है, वो लोगों ने पहले एंटिसिपेट करके अपना जो इन्वेस्टमेंट थी, थोड़ा जो हॉट मनी होता है वो बाहर चला गया था। तो अभी उतनी सेलिंग है नहीं, बट आने वाले दिनों में जो रिस्क है कि ये अक्टूबर में
साल के एंड की कैलेंडर ईयर 22 की जो रिडम्पशन है वो इस टाइम पे रिक्वेस्ट देनी होती है आपको हेज फंड्स को यूएस मार्केट वगैरह में, और उसके बाद वो नवंबर वगैरह में प्रेस करके वो पैसा ले जाते हैं, और देयर इज ह्यूज प्रोसेस। तो अगर अब कोई मेजर सेलिंग नहीं आई तो वो एक फैक्टर रहेगा। जब आपकी सेलिंग नहीं है, बहुत ज्यादा कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो थोड़ी सी भी बाइंग जो है वो स्टॉक्स प्राइसेस को ऊपर ले लेती है, स्टेबल मोड में रखती है। वो एक रीजन है कि हमारा बाजार पिछले कुछ दिनों से कोई मेजर सेलिंग नहीं देख रहा, कुछ ज्यादा, क्योंकि पहले देख चुके हैं हम। आई मीन देयर वाज अ फेज जब हम इनिशियल पार्ट ऑफ द ईयर में वी वर अंडर परफॉर्मिंग लॉट ऑफ अदर मार्केट्स। राजीव जी, यहाँ पर एक बार फिर से लौटते हैं इन्फोसिस की ओर। दो चीजें यहाँ हैं। एक, इन्फोसिस का जो परिणाम है वह जो आईटी सेक्टर है उसके क्या मूड को दर्शा रहा है, क्या कारोबार को दर्शा रहा है ये परिणाम, और दूसरा इन्फोसिस ने बाईबैक योजना की जानकारी दी है, तो ऐसे में जो आम कह लें कि इसके शेयर होल्डर हैं उनके लिए क्या संभावनाएं बनती हैं कि अपना शेयर यदि वो बेचना चाहें तो क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं जिनके तहत वो। मैंने अभी उसकी डिटेल जो है मनोज जी अभी नहीं देखी है बिकॉज अनाउंसमेंट की। अगर वो टेंडर है, ऑफर है या ओपन मार्केट ऑफर है, अगर टेंडर है तो आप करना चाहे तो कर दीजिए। बट द फैक्ट इज अगर आप लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर हैं जी, तो क्यों आपको एक अच्छे बिजनेस में, और आपने काफी पहले लिया, तो क्यों आप एक अच्छे बिजनेस को बेचना चाहते हैं? मतलब देखिए, द फैक्ट इज कंपनी वापस ले रही है, उसको वैल्यू दिखती है तभी वापस ले रही है। तो जब उसको सामने कंपनी को वैल्यू दिख रही है तो आपको क्या जल्दी है? एंड आप मतलब इट मे साउंड वेरी यू नो इन दी अदर सेक्टर्स एंड ऑल, द फैक्ट इज दैट आईटी के जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे क्रिएट वेल्थ। इतनी टेलविंड है डिजिटाइजेशन की जी, उसकी ग्लोबल डिमांड की, तो हो सकता है देखिए पिछले 4-6 महीने से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, बट लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो दे आर वेल्थ क्रिएटर्स। जी जी, तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा किसी को उत्सुक होना चाहिए अंटिल नहीं इसको आर्बिट्राज चेक करना चाहिए कि मैं ले लूं फिर मैं ओपन ऑफर में टेंडर कर दूं और ऐसा कर दूं। तो वो एक अलग किस्म का ट्रेडिंग का वो है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट फॉर अ शॉर्ट टर्म रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास इन्फोसिस के शेयर पड़े हुए हैं, अगर पिछले दिनों की तेजी की हाई पे भी लिए हुए हैं तो वी शुड नॉट वरी, वो थोड़े दिनों में प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो उसको क्रॉस कर जाएगा। जहां तक आपने सेक्टर की बात करी, आई थिंक there is no dearth of demand as far as the IT services from India is concerned. ये वो कोविड के दिनों में जो फ्रंट लोड हो गया था, सबको डिजिटाइजेशन जाना है, सबको क्लाउड जाना है, वर्क फ्रॉम होम के लिए आपको अपने पूरे ऑफिस को कनेक्ट करना है, एक्स करना है, वाई करना है, वो सारी चीजें जो हैं जी, वो सारी चीजें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, अभी उतना वो शायद उसके लिए बहुत ज्यादा आप उसे पढ़ेंगे नहीं समाचार पत्रों में या ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो मैक्रो पिक्चर अभी भी दैट डिमांड फॉर आईटी सर्विसेज जो अगले 7 या 8 साल में आनी थी वो फ्रंट लोड होगी, तो अभी आनी शुरू हो रही है और चलेगी कम से कम अगले 3 साल। वो उस पिक्चर में चेंज नहीं हुआ है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो गाइडेंस देती हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि हमें काम की कमी नहीं है। इनफैक्ट मिड कैप कंपनीज उस स्टेज पे है कि वो कस्टमर्स को ना कर रही है। मैंने एक कॉन कॉल सुन रहा था तो जिसमें एमडी सेड के नाउ वी आर डिसाइडिंग कि इस कस्टमर के साथ हमें काम नहीं करना है बिकॉज हमारे मार्जिन बहुत कम है। सो इन इंडस्ट्री जब आप अपने कस्टमर को चूज करने की स्थिति में आते हैं तो ऑब्वियसली डिमांड एक्सट्रीमली हाई है, देन तभी आप ये कर सकते हैं। यहाँ पर श्रोताओं को हम जानकारी देना चाहेंगे कि इन्फोसिस का जो ये ऑफर आया है बाईबैक का, वह ओपन मार्केट बाईबैक ऑफर है। Okay, Rajiv, can you hear us? Yeah. Okay. So, they're talking about economies trying to really fight inflation by raising interest rates, and we do not know when it's going to settle. But at this rate, don't you think liquidity is likely to dry up in the next 12 months or so in India and globally? And in that scenario, what happens then? The liquidity has reduced. I mean, it's actually started reducing in the middle of the 2021. So I don't think so there's going to be any such. Of course, it's going to be tighter than what it used to be. And, every time you can't have a helicopter money, which US Fed did when COVID came in. Probably the asset prices will have to readjust to the fact that, the lesser liquidity is going to be there in the global markets. But because my focus area is to always figure out
that should a retail investor think of it and either stop buying or what should be the actionable for him? My answer is no. These macroeconomic problems, Rajesh, I mean, I can remember at least for 26 years, all these headlines, macro problems, X, Y, blah, blah, blah. Every year there is some or the other issue. Sometime COVID, sometime global financial crisis, sometime ECB doing this, sometime one other thing. If you're an investor, don't bother about it. Don't bother about the noise which is created by the headlines. Stick to a good company, stay there. Liquidity will come down. Fair enough. What will happen? The price earning multiple instead of 20 will become 18. But the business will remain the same. It will remain good. If the company will pay dividend, yes. Then if pays dividend, then fair enough. Does not matter. So all these things, Rajesh, I don't know to sound thing, but too much of analysis in markets sometimes leads to paralysis. In the sense that we become a frequent buyer and we become a frequent seller. We don't have, the only decision one needs to take is that whether at the time of buying a stock, whether you are buying a stock or you are buying a business, if you are buying a right business, even at a wrong price, the probability that you will make money at the end of the day is extremely high. Okay. So liquidity comes and goes, let it happen. It doesn't matter. As a retail investor, I'm telling you. But yes, for the professionals who are in a business of making the living out of it, those people will tend to adjust all the earnings and all. But I don't think so that's happening, first of all, in a way that it could impact the asset prices in a very major way. Okay. राजीव जी, हम आपका ध्यान रुपए की ओर ले चलना चाहेंगे। 82 रुपए 35 पैसे पर जा पहुंचा है रुपया 4 पैसे कमजोरी के साथ। कितना चिंताजनक हो चला है ये हमारे लिए, और क्या सर चिंता ही नहीं मनोज जी। जी, ये हमेशा हम इसी तरीके से सोचते हैं कि चिंता। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, 2 मिनट लेके। जी, चाइना भी एक्सपोर्टर है, हम भी एक्सपोर्टर है। जी, हमारा रूपी स्ट्रांग रहता है, चाइना का करेंसी वीकन हो जाती है, फॉर दैट मैटर एनी अदर कंट्री आप मान लीजिए वो वीकन हो जाता है। तो जो उसके गुड्स एंड सर्विसेज है वो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, क्योंकि सामने वाले को वो ज्यादा मिल जाएगा उसी सेम रुपए उसमें डॉलर में, हमारे अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो एक तरीके से देयर हैज टू बी अ बैलेंस। बट अगर कितना रुपये डिप्रिशिएट आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो 3 से 4% के आसपास डिप्रिशिएट होता है। कभी फ्रंट एंड हो जाता है, जैसे पिछले कुछ सालों में रिलेटिवली स्ट्रांग रहा था। बट दिस राउंड ऑफ एडजस्टमेंट, जब बाकी करेंसी जो है वीक हो रही है डॉलर के अगेंस्ट, तो हमको भी वीक होना जरूरी था। मतलब इट प्रॉब्ली वाज एसेंशियल फॉर इट अस टू सी दिस डिक्लाइन। अदरवाइज आप स्ट्रांग रुपी को लेके क्या करेंगे? आपने एक्सपोर्ट्स को अनकॉम्पिटिटिव कर देंगे। तो मुझे ये द कोरिलेशन बिटवीन के रुपी गिर गया तो हमारी इकोनॉमी खराब हो गई, ऐसा नहीं है। बट हाँ, सिर्फ एक चीज होती है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग वॉलेटिलिटी नहीं होना चाहिए कि भाई आज 82 तो कल 85 होगा। एक ग्रेजुअल जो है लेवल जो है ग्रेजुअली विदाउट एनी वॉलेटिलिटी होती है, विच आरबीआई टेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इज एबल टू इंश्योर दैट। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां अमेरिका में कल हुई गिरावट का असर निवेशकों पर आज दिखा है। बिकवाली के दबाव में चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.3% घाटे में रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.8% की गिरावट हुई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.6% नुकसान में रहा। उधर हांगकांग के हिंगसेंग में 1.9% की गिरावट आई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.4% घटकर बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक मिला जुला रुख था। अंतर्देशीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर पर चल रहा था। फ्रांस के CAC 40 0.2% बढ़त में था और जर्मनी का डेक्स भी 0.7% लाभ के साथ कारोबार कर रहा था। The U.S. share markets witnessed losses yesterday in a volatile session. The 3 major U.S. indices ended in the red ahead of a key U.S. inflation data. The Dow Jones Industrial Average Index slipped marginally by 0.1%. The S&P 500 fell 0.3%, and the Nasdaq Composite declined 0.9%. Rajiv, news just come in. U.S. inflation has hit 40-year high of 8.6%. Now, this makes case for more volatility, more aggression from the Fed. Yes, in short term, yes. Now, I mean, to figure out
when this will finally come down, one has to look at how much the normalization of the trade is happening. See, still a large part of inflation, while it might not be as high as what most of us has assumed at that point of time, but still a large part of the inflation is either primarily led by the high energy cost across the world. And energy prices have remained in this for a very long period of time because of geopolitical reasons. Secondly, we'll have to figure out, are the global supplies coming back to normal, supply chain coming back to normal or not? Probably one of the things which one needs to watch at this point of time is how the shipping rates are going on. The normalization happening out there, is the container availability has become normal, all those things are involved. So I don't know how much inflation, part of the inflation, supply chain problem-led inflation is over or not. Secondly, if you look historically, whenever there is a free money distributed, as was done in COVID by Western economies, especially led by US, post that, there is a spike in inflation, which of course is not as high as we have seen this time. Let's see till what time it's sustained. I think this is the fear which is making market volatile globally. We'll have to figure out and watch currency markets for more indications for what is going to happen in the equity market. Okay. Rajiv, if you were to advise on one trade for next 3 years, and which one would you... Sorry? If you were to advise to somebody to buy from which trade, which sector, which would that be, irrespective of Fed or RBI or the rupee or the Russian-Ukraine war? Which is the one that you would recommend and which is the one you would say avoid? No, I'll not, it's best to have a diversified portfolio. One should never go in for, one concentrated bet because you never know what will happen. Maybe in the next 3 years, Even in next 3 years. I mean, Rajesh, see, the fact is next year, who knew? I mean, no, who could have imagined that something in IT sector, that this kind of boom is going to happen because of this? Who could have imagined that specialty chemical is going to come out like this in last 2-3 years? So sectoral bets, it is not, if you want investing is a full-time job. If you can't track your investment, it's always best to have a diversified portfolio because agar kuch problem rahega, some other thing will take care of it. So for even it's 3, 4, 5, if it's not your profession, if you can't spend your time in understanding and have the ability, the skill set to understand what the stock market is, best thing is to go with a mutual fund scheme. You can increase your allocation. As you think 3 years, I will still stick to buying let's say an ETF, Nifty ETF. Because, why should I? It's not only difficult to, I can give a call for any sector and say, I'm bullish on it, but I need to be accountable, to people who are listening to me. So that is why and the fact is that diversification is always helpful. Look at the history, 40-year history. Okay. The best returns have come due to diversification. जी राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए राजीव. धन्यवाद मनोज. Thank you, Rajiv. And moving on, a decision by the OPEC Plus oil producer group last week to rein in output has driven up the crude prices. Oil today rose around 0.5%. In intraday trade, Brent crude was trading at $92.75 per barrel, while WTI crude prices were at $88 per barrel. और अब चलते हैं सराफा बाजार. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाले सोने का मूल्य 160 रुपए बढ़कर 51,065 रुपए प्रति 10 ग्राम पर अंतर्दिवसीय कारोबार में चल रहा था. दिसंबर अनुबंध वाली चांदी भी 400 रुपए महंगी होकर 57,210 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई. And before we close the headlines once again, domestic stocks fall more than 0.5%. Sensex closes below 57,300 level. Nifty settles below 17,050 points. Rupee weakens 4 paise against the US dollar, and Brent crude price hover around $93 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.